Good morning, everybody. Welcome back to the class. As I have discussed yesterday, that today we'll be starting our practice questions. So we will be starting our direct and indirect speech as we have done that topic yesterday. So we'll practice the questions of the same topic today. Let's see. So here we have our question number 1. I have told you that there are certain rules for direct and indirect speech. Okay. Now we have to see how to use those rules in these questions. These are of SSC Steno. These questions are of, and at the end of this class we will we will also do one more thing, that is our comprehension. We will also do our comprehension. We will solve one comprehension, like in every similarly in every upcoming practice series we will follow the same pattern. First we will discuss the questions of a particular grammar topic, and then we will solve one comprehension. So let's start with the very first question. It states, he said, I will return tomorrow. What he said, that I will return tomorrow. So यहाँ पे देखो, I have told you, whenever you have such questions. अब I have told you yesterday, I have given you some of the words. For example, tomorrow कैसे हमारा convert होगा, today कैसे convert होगा. All these I have given you tomorrow. I have told you about these. Let's see यहाँ पे हमारे पास है, देखो. He said, comma, inverted comma, I will return tomorrow. ठीक है. तो अगर हम इसको, I'm writing it over down here, अगर हम इसको indirect में convert करेंगे, at that point of time what we will do? He said will remain what? He said. Now हमने अपने reporting उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा pronoun में हमने पढ़ा था, sorry, not in reporting verb, in a pronoun rule we have read कि जो भी हमारा word होगा, जिससे भी हम स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही होगा तो ही यूज करेंगे, शी होगा तो शी यूज करेंगे. आई विल रिप्लेस दैट. ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट. आई की जगह पे हमारे पास ही. नाउ आई हैव टोल्ड यू चेंज इन मोडाल्स कैसे होगा. अगर विल है तो विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वुड. शैल है तो शैल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? शुड. ओके. So similarly, may might में convert हो जाएगा. May will convert to what? Might. तो हम उसी accordingly यहाँ पे देखो, he said that, he will किसमें convert होगा? Would. Now you have only 3 options जहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है. अब देखो, return हमारा return ही रहेगा क्योंकि हमने would यूज कर लिया. Return. अब टुमारो हमें कन्वर्ट करना है नेक्स्ट. अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, द नेक्स्ट डे. द नेक्स्ट डे. नाउ सी विच ऑप्शन इज दिस? इट इज ऑप्शन नंबर सी. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, वन मोर थिंग. Whenever you will see, read each and every option. Whenever you see such question, you have to read each and every option like properly. For example, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें पता है कि दैट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज विल वो वुड में कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे. नाउ वी नो कि विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होगा ही. सो विद दैट वी हैव 1, 2 and 3 ऑप्शंस लेफ्ट. अब नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? टुमारो. अब मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू ना, वी फॉरगेट दैट कि यहाँ पे टुमारो भी हमें इसको भी चेंज करना है. ओके, सो द नेक्स्ट डे हम इसको अवॉइड करेंगे और टुमारो वाले स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं. दैट इज इनकरेक्ट. ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि टुमारो हमें चेंज करना ही है. अगर हमने सही से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, देन वी वेरी वेल नो कि टुमारो क्या है. टुमारो हमको चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में. तो टुमारो यहाँ पे हमारा सेम है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में इट विल नॉट बी टुमारो, इट विल बी द नेक्स्ट डे. नाउ वी नो कि टुमारो में हमारा क्या है? टुमारो कन्वर्ट होगा नेक्स्ट डे के अंदर. सिमिलरली अब देखो यहाँ पे द नेक्स्ट डे है और यहाँ पे भी द नेक्स्ट डे है. 2 ऑप्शंस में हमारे पास नेक्स्ट डे है. अब हमारे पास जब 2 ऑप्शंस में नेक्स्ट डे है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल सी कि इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है. गिव मी अ मिनट. या वी विल सी कि हम इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है. अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है he said I will return tomorrow. I को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? he said, तो he will return tomorrow में कन्वर्ट होगा. he will return tomorrow. तो he said that
he would return the next day. He said that. यहाँ पे I would है. Okay. Over here we have what? We have I would. It's I would. Just let me erase it. Give me a minute. Okay. यहाँ पे क्या है? He said that I would return. In option number D, as you can see, it is that I would return the next day. पर हमें I को किस में कन्वर्ट करना है? He में, तो ऑप्शन नंबर D भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. We are left with just option number C. So what you have to keep in mind कि if there is any kind of pronoun, he, she, it, and if there is I किस में कन्वर्ट होगा हमारा? He, she, it, they, not I oblique we. Okay. अब देखो, next thing you have to keep in mind कि अगर हमारे पास क्या है, if we have models, and then models will be converted to what? May will convert to might, will and oblique shall, will and shall will convert to what? Would and should. I hope this is clear. Now let's move forward to our next question. अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ओके, लेट्स सी. रोटेशन स्टार्ट यहाँ पे है हमारे पास. व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड देयर. क्लोज्ड. नाउ यहाँ पे लिखा है शी एक्सक्लेम. ओके, व्हाट अ वंडरफुल टाइम. अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड देयर, शी एक्सक्लेम. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जब हम ये हटाएंगे तो हमारा ये शी एक्सक्लेम्ड ही रहेगा. व्हेनेवर वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम आज रिक्वायर्ड रिपीट ना लगा कि व्हाट वी यूज एक्सक्लेम्ड. तो यहाँ पे देखो, यहाँ चारों ऑप्शंस में आपके पास शी एक्सक्लेम्ड है. वेरी फर्स्ट थिंग, नाउ यू हैव टू सी दैट फर्स्ट ऑप्शन स्टेट्स she exclaimed that she had quite a wonderful time there. Okay, she exclaimed what? That she had quite a wonderful time there. A B option states what? She exclaimed that she had quite a wonderful time there. She exclaimed that she had quite a wonderful time there. And C option states she exclaimed that they had quite a wonderful time there. And D option states she exclaimed that they have quite a wonderful time there. I hope this is clear. अब यहाँ पे देखो, ये अगर हमारा क्वेश्चन है that she exclaimed what a wonderful time we had there. अब हमें अगर इसका आंसर चूज करना होगा तो इसका आंसर हम कैसे चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले जो दो ऑप्शंस हैं they are same. She exclaimed that she had quite a wonderful time there. She exclaimed that she had quite a wonderful time there. पर यहाँ पे बात क्या हो रही है? What a wonderful time we had there, she exclaimed. What a wonderful time we had there, she exclaimed. तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? What a wonderful time they had quite a wonderful time. She exclaimed that they had quite a wonderful time there. अब ये इनकरेक्ट है, इसका सेंस नहीं है. नेक्स्ट देखो, they have quite a wonderful time. हम had को have में चेंज कर ही नहीं सकते. Cannot change had to have. Again, the option is also what? Incorrect. Now move forward to option number B and option number C. A and B, sorry. We have two options, दो की एकदम सेम है. यहाँ पे देखो, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है. Okay, you can mark any one of these as your answer. Now what you have to do at that point of time, जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे क्या होता है, most of the times you have questions जहाँ पे जो आपके ऑप्शंस है वो रिपीटेड होता है. जैसे कि यहाँ पे दोनों में ऑप्शंस क्या है? दे आर रिपीटेड. तो यहाँ पे आप कोई भी ए या बी आंसर लगा के आ जाओ. ओके, सो इट्स इजी, दोनों ए और बी बोथ आर करेक्ट. मेनी टाइम्स लाइक क्वाइट ऑफन ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे ऑप्शंस क्या है? दे आर सेम. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you need not to worry, just take any one of those because they are same. और हाँ, many a times what happen when you have such options ना, जैसे कि ये A और B है, they are same, chances of the correct answer from these is high. इन दोनों में से जो हमारा correct answer होगा उसके chances क्या होंगे? It will be high. So next move forward. Let's move forward to the next question. अब question number 3 it states. Question number 3 what it says?
the teacher said to the students, you should obey your parents. What the teacher said to the students, that you should obey your parents, you should be of help to them. टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, एंड यू शुड बी ऑफ हेल्प टू देम, उन लोगों का आपको क्या होना चाहिए, शुड बी ऑफ हेल्प टू देम, should be able to help them, ठीक है, उनकी मदद उनके काम आना चाहिए तुम्हें. तो this is what teacher said to the students. Now when we look at this question, it says what? It says that the teacher is saying students कि you should help your parents and you should obey them. अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे दो है. First is teacher advise the students to obey their parents and they should be of help to them. Okay. B option states teacher commanded the students to obey their parents and further added that they should be of help to them. C option states teacher requested the students to obey their parents and added they should be of help to them. Next, D option states teacher advised the student that they should obey their parents and should be of help to them. D option is incorrect. It is grammatically incorrect. This option is grammatically incorrect. Okay, now let's see option number C. Teacher requested students. Request जहां भी होता है वहां statement में क्या होगा हमारे पास? Please. तो eliminate option 3. अब देखो A and B है. अब जब हम A और B में देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है टीचर कमांडेड इन ऑप्शन नंबर बी एंड फर्दर एडेड दैट दे शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. अब यहाँ पे है टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू ओबे देयर पेरेंट्स एंड एडेड, यहाँ पे क्या है, देयर इज दिस फुल स्टॉप, तो ये फर्दर ऐड कर रहा है एक और स्टेटमेंट में. ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. अब यहाँ पे कमांड किया है उसने स्टूडेंट को बोला है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. इट्स अ कमांड, इट्स नॉट एन एडवाइस फ्रॉम अ टीचर्स एंड इट्स अ कमांड. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट. व्हेनेवर यू विल फाइंड एनी पर्टिकुलर थिंग, अब आई हैव टोल्ड यू, जब भी कोई फॉर्मल थिंग होगा, ठीक है, जैसे कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच इज फॉर्मल, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट, फॉर्मल. सिमिलरली ऑफिस, अगर आपके ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि बॉस आस्क्ड हिज जूनियर टू डू समथिंग, देन दैट विल ऑलवेज बी अ कमांड और ऑर्डर. ओके, तो सिमिलरली जब टीचर बोलेगा, यहाँ पे टीचर कमांड करेगा स्टूडेंट को दैट यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. ओके, इट्स अ कमांड, इट्स नॉट एन एडवाइस, इट इज नॉट एन एडवाइस. सो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट, फॉर्मल्स, जब भी हम फॉर्मल बात के चीजों के बारे में बात करते हैं, एनीथिंग which have anything formal in it, कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई भी क्या है, फॉर्मल फॉर्म है, at that point of time what we will use, either command or order. Now request होगा, if you have request, तो वहां पे स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगा, प्लीज. ओके, वहां पे आप क्या यूज करोगे, रिक्वेस्ट. Now let's move forward. So answer of this third question is B. Teacher commanded the student to obey their parents and further added that they should be of help to them. Next, देखो, fourth option states, my mother said. What mother said? Please go to the shop. अब my mother said, comma inverted comma, please go to the shop. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब देखो यहाँ पे है हमारा माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप. अगर हम इसको अपने उसमें लिखें, यहाँ पे प्लीज आ गया, प्लीज क्या है, रिक्वेस्टेड. लेट्स राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, लेट्स राइट डाउन दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लुक ओवर हियर. सो इट स्टेट्स व्हाट, इट स्टेट्स माई मदर requested, just give me a minute. Yeah, my mother requested. यहाँ पे हमारे पास आ गया requested. We are only left with two options.
me to go to the shop. Requested me to go to the shop. Now, as per this, यहाँ पे देखो, C option states, my mother requested me going to the shop. Going to the shop. The statement is incorrect because it is inappropriate in every sense. It is inappropriate. Now, as we see cover statement number B, it states, my mother requested me to go to the shop. B statement states this. My mother requested me to go to the shop. The fourth option का हमारा B option क्या है? B part is correct. My mother requested me to go to the shop. अब देखो, when how we came to know this is the correct answer, there is one more trick we can use over here. पहले तो हमें पता चला कि यहाँ पे प्लीज है, तो प्लीज से हमने और नैरो डाउन कर लिया. हमारे we have just two options, फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन. हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट. Why I am telling you these कि आप उसको पूरा ऐसे eliminate use करो, because it will save you time. Okay. Now we have this as it states that my mother requested me to go to the shop. My mother requested me going to the shop. Requested me going to the shop. It doesn't what? It doesn't make sense. This is incorrect. Please go to the shop. My mother said, please go to the shop. My mother requested me to go to the shop. What mother said? She requested so that you can go to the shop. So this is what? This is our correct answer. So option number B हमारा क्या है? Correct answer. Again, I am saying if you won't practice it, then you won't be able to do it. Practice is required for each and every topic in English. Now let's do our question number 5. Question number 5 said, the reporter said, we have been following the matter closely for a month. Quotation closed. Reporter said, comma, inverted comma. We have been following the matter closely for a month. अब देखो, यहाँ पे क्या है? Reporter said कि हम क्या कर रहे हैं? इस मैटर को एक महीने से बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अब when we have to change this, have हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Have will be converted to what? Have will convert to had. Have हमारा कन्वर्ट हो जाएगा had में. Similarly, closely for a month. तो हमारे इस पूरे स्टेटमेंट में यहाँ पे सिर्फ ये आएगा, हमारे पास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? That. Now let's see what this statement says. Let's write it down by ourselves and let's check the correct answer then. So indirect में है, पहले हम ये चेक करो, have से had चेंज होगा, तो जितनी भी जगह पे had नहीं है जिन स्टेटमेंट्स में, वो हमारे क्या है? गलत है, हटाओ उसको. Now it states what? The reporter said that we have been following the matter closely for a month. अब देखो, जब हम इसको indirect में convert करेंगे, what it will be? The reporter said that they had been following the matter. Following the matter closely for a month. So this one is what? Correct. Now let's move forward. Question number 6 में देखो, it says, what are you doing here? Question number 6 states what? What are you doing here? She asked me. She asked me, what are you doing here? तो वैसे ही जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पहले भी पता है, the very first thing is, she, what are you doing here? It's a question. अब I have told you, when we have question statements, जब हमारा interrogative statements है, तो हमारा जो word है, जो question word है, our question word will act as what? Joining clause. हमारा question word कैसे act करता है? Joining clause. Now let's see, अब यहाँ पे है, what are you doing here? She asked me. अब यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अब what क्या है हमारा? क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा, तो जिस स्टेटमेंट में ये कनेक्ट नहीं कर रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे. पर लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है, she asked what I was doing here. She asked what I was doing here. This is our very first statement. B states she wants to know what I am doing here. Now C option states she wants to know what I was doing here, and D is she wanted to know what I was doing here. ठीक है,
she wanted to know. अब देखो जो पहली बार यहाँ पे हमारा asked है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, she asked what I was doing here, what I was doing here, but what I was doing is not the correct answer. What I was doing here ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, अगर यहाँ पे I नहीं यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, she asked what I was doing here, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको कुछ आंसर चाहिए, ठीक है। अब बी ऑप्शन में देखो, she wants to know what I was doing here, पर यहाँ पे अगर wants है, अगर उसे जानना है तो यहाँ पे wanted होगा ना कि wants होगा, again want is incorrect. Now डी ऑप्शन देखो, she wanted to know what I was doing here, I was doing there, ठीक है, she wanted to know what I was doing there. अब देखो, as we see our option number A, we know that option number B and C is incorrect. We are left with option number A and D. यहाँ पे है I was doing here, ये here हमें चेंज नहीं करना है, here हमें किस में चेंज करना है, there में। सिर्फ एक ऑप्शन है जहाँ पे हमारा क्या है, there. So she wanted to know what I was doing there. Okay, she asked what I was doing here. Here is जहाँ पे वो भी currently खड़ा है, there मतलब जब वो उस पर्टिकुलर प्लेस की बात करेगा, तो यहाँ पे क्या है डी ऑप्शन में, she wanted to know what I was doing there. तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. The lawyer said to his client, we will win the case. Lawyer said to whom? Said to his client that we will win the case. अब देखो यहाँ पे है said to his client we will win the case. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है the lawyer told his client that they would win the case. अब बी ऑप्शन में देखो, it states the lawyer said that the client would win the case. Said to his client है, said that the client would win. अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए that the client would win the case, it is incorrect. Lawyer said that the client would win the case. Lawyer ने client से बोला है, lawyer ने ये नहीं कहा है कि client जीत जाएगा, लॉयर ने क्लाइंट से कहा है कि हम जीत जाएंगे. तो दिस स्टेटमेंट स्टेट्स दैट इट इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन स्टेट्स द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे शुड विन द केस. दे शुड विन द केस इट स्टेट्स. विल हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वुड में. अब देखो डी ऑप्शन स्टेट्स द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस. टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस. अब हमारे पास देखो वी हैव टू ऑप्शन जो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर पा रहे हैं. पहला इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे है हमारे पास ए ऑप्शन स्टेट्स द लॉयर टोल्ड टू हिज क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस, एंड डी ऑप्शन द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस. अब आई हैव टोल्ड यू कि वी हैव टू कन्वर्ट सेड टू टोल्ड. हम सेड ऑब्लिक सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं. ओके अब यहाँ पे टोल्ड टू है इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number states what? Question number states that the watchman warned the boys not to go deep in the case. The watchman warned whom? The watchman warned the boys not to go deep in the case. ठीक है कि आप केस में ज्यादा डीप मत जाओ, ये वॉचमैन ने वार्न किया. अब नाउ लेट्स सी. It is not the case, it will be C. Not to go deep in the sea. Please correct it. Okay. अब वॉचमैन ने वार्न किया जितने भी वहां पे बॉयज थे कि आप क्या करो, सी में ज्यादा डीप मत जाओ. This is what the watchman said. So it is C. अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है. This statement is indirect. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. अब ए ऑप्शन देखो हमारा, ए ऑप्शन स्टेट्स द वॉचमैन said to the boys you are not going deep into the sea. Watchman said to the boys what? That you are not going deep into the sea. B option says the watchman said boys don't go deep into the sea. अब यहाँ पे एक pause है क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा punctuation mark. Watchman ने बोला boys, there's a pause, then don't go deep into the sea. Now next is the watchman said boys didn't go deep into the sea. Didn't go deep into the sea, the statement makes no sense. First वो मैं eliminate कर दो. अब next D option says the watchman said to the boys why do you go deep into the sea. पर watchman ने क्या किया यहाँ पे हमारे indirect statement में, warn किया है उन्हें
कि you do not go deep into the sea, ठीक है, not to go deep into the sea. But option number state what? It is a question. Why do you go deep into the sea? Okay, so option number D is also what? Incorrect. We eliminate option number D as well. अब देखो हमने जब D eliminate कर दिया, we have eliminated our option number C. We are left with A and B now. Now let's see. यहाँ पे देखो, watchman said to the boys, you are not going deep into the sea. तो अगर ये हम indirect में convert करेंगे तो क्या आएगा? Watchman said to the boys that they are not, or watchman told the boys that they are not going deep into the sea. यहाँ पे warning नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को भी एलिमिनेट कर देंगे. नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी, जहां पे क्या है, एक कॉज है, बॉयज डोंट गो डीप इनटू द सी. तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ व्हाट, वार्निंग. ठीक है, तो दीज आर द स्टेटमेंट जहां पे आपको ध्यान रखना है. देखो यहाँ पे कहीं पे भी ना वार्नड नहीं है स्टेटमेंट में, हमारे कहीं पे भी डायरेक्ट स्टेटमेंट में वार्नड नहीं है. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव टू अज्यूम वन ऑफ द स्टेटमेंट्स जिसमें ये है. जैसे कि यहाँ पे है, there is what, there is a pause. When we say it out loud, we have there is a pause. तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को अपने कंसिडर करेंगे. So whenever you get any kind of statement with warned or something, at that point of time you have to keep in mind what, pause, and next is जो वहां पे क्या है, हमारे punctuation signs यूज हुए हैं. Okay, I hope this is clear. Now let's move forward. अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है, the shopkeeper told me to be kind enough to pay for the tape recorder in cash. अब ये भी हमारा किसमें है, statement is also indirect. We have to convert it to what, direct. Let's see. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि shopkeeper told me to be kind enough to pay for the tape recorder in cash. Told me to be kind enough to pay for the tape recorder in cash. अब हमारे पास ये है, अब हमको इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 states what, the shopkeeper said to me, will you pay for the tape recorder kindly in cash? Will you pay for the tape recorder kindly in cash? Makes no sense. Statement makes no sense. So directly eliminate it. Eliminating option number 1. B options. Said, the shopkeeper said, comma, inverted comma, be kind enough to pay for the tape recorder in cash. Be kind enough to pay for the tape recorder in cash. We can consider it. Let's see option number C. The shopkeeper exclaimed, but there is no exclamatory mark. यहाँ पे अगर exclaimed यहाँ होता तो यहाँ पे भी हम exclaimed लिखते. ठीक है, तो exclaimed है ही नहीं जो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में, तो exclaimed is not there. ठीक है, exclamatory mark आप इसमें लगाओ, but it has to be where, in our indirect statement. अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो in our indirect statement में भी वहां पे हमारा क्या आना चाहिए था, exclaimed. Again, let's see option number D. The shopkeeper ordered me, please be kind enough to pay for the tape recorder in cash. Please be kind enough, तो यहाँ पे क्या कर रहा है शॉपकीपर, रिक्वेस्ट कर रहा है, बट हमारे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास कहीं पर भी रिक्वेस्ट नहीं है. Eliminating option number D as well. So now we have what, we are left with our option number B, and the correct answer will be what, after all this elimination also it's option number B, otherwise also it's option number B. For example, देखो, the shopkeeper said become what, told me to be kind enough to pay for the tape recorder in cash. Be kind enough to pay for the tape recorder in cash. That's all. Now let's move forward to our question number 10. Question number 10 states what? Question number 10 states, she asked her brother if he could give her some money. She asked who? Her brother, if he could give her some money. अब देखो यहाँ पे है, then it's not them, it's then. It's then. THEN. Okay. She asked brother if he could give her some money then. Okay. अब देखो then हमारा किस में कन्वर्ट है, हम now में कन्वर्ट करते हैं. now का क्या है, then indirect statement है, indirect word है now का. now you have to select किस ऑप्शन में now है. हमारे पास बी ऑप्शन में नाउ नहीं है, बी एलिमिनेट करो. सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है. ओके, नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1. इट स्टेट्स, शी सेड टू हर ब्रदर,
कुड आई गिव यू सम मनी, कि वो अपने ब्रदर को बोलती है कि कुड आई गिव यू सम मनी, क्या मैं तुम्हें कुछ मनी दे सकती हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या है, शी आस्क्ड हर ब्रदर। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, द गर्ल इज आस्किंग, शी इज आस्किंग हर ब्रदर कि वो उसे कुछ पैसे दे सकता है, इफ ही कुड गिव हर सम मनी। इट्स नॉट द अदरवाइज, ऑपोजिट फॉर्म में नहीं है कि शी कुड गिव हिम सम मनी। ओके, so this is incorrect. Now in option number C states, she said to her brother, can you give me some money now? This is correct. Can से किस में convert हो गया, could. Now D option एक और बार चेक कर लेते हैं, she asked her brother, give me some money. Okay, अब यहाँ पे give me some money now है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, she asked her brother if he could give her money, तो could हमारा can में कन्वर्ट होगा। तो कैन में भी अगर हम इसको नैरो आउट करेंगे तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में कुड है, एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में कैन है, पर यहाँ पे क्या है, नाउ नहीं है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन में कैन भी है और नाउ भी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स का जो पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो बाय हियर व्हाट वी गेट दैट अ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, दिस इज द पैराग्राफ आई वाज टॉकिंग अबाउट। वी विल डिस्कस वन ऑफ द पैराग्राफ्स टुडे, and in every series we will do the same. Now let's see. It says, people very often complain that poverty is great evil. Now one more thing, sorry I forgot. Whenever we read a paragraph, first of all read the questions. Now let's see. अब यहाँ पे है the phrase on tenter hooks means what? On tenter hooks का मतलब क्या है जो हमारे पैराग्राफ में दिया होगा। Second states, it is true that money alone can give happiness, money always give happiness, money seldom give happiness, and money alone cannot give happiness. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। Now let's move forward to next question. A rich man's life may become miserable. एक rich man की life miserable बन जाती है कब? If he has evil son, bad health and business worries, if he does not enjoy good health, if he has business worries, if he has business worries and his only son has taken to evil ways. इन चारों में से हमें एक ऑप्शन बताना है कि किससे एक रिच मैन की लाइफ क्या है, मिजरेबल बन जाती है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इट स्टेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? इट स्टेट्स पॉवर्टी अ ग्रेट एविल, the key of happiness, contentment, the key of happiness, money and contentment. And option number 5 state, question number 5 is, which of the following statement is true? Only a poor can be contented, only a poor but contented man can be happy. A poor but contented man can never be happy. A poor but contented man can be happy, and D is, a poor but contented man is always happy. These are the 4 options. Only a poor but contented man can be happy. Only a poor but contented man can never be happy. A poor but contented man can be happy. A poor but contented man is always happy. So now we will look into a paragraph and see what all these questions stand for. Now, people very often complain that poverty is a great evil and that it is not possible to be happy unless one has a lot of money. अब पीपल ऑफन कंप्लेन करते हैं, लोग ऑफन कंप्लेन करते हैं कि पोवर्टी एक बहुत बड़ा इविल है और लोग बिना पॉसिबल नहीं है कि अगर उसके पास में पैसे नहीं हो तो वो खुश रह सकता है। इट स्टेट्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी हैप्पी अनलेस वन हैज अ लॉट ऑफ मनी। अगर एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा नहीं हो तो खुश रहना इट इज नॉट पॉसिबल, ऑल्दो इट इज नेसेसरली ट्रू and it is truth as well. Even a poor man living in a small hut with, although it is not necessarily true, पर ये सच भी नहीं हो सकता, it is sorry of the it's the opposite statement of what I said. So it states कि although this is not necessarily true, ये necessarily मतलब it is not even particularly सच भी नहीं है। कैसे कि even a poor man living in a small hut with none of his comforts and luxuries of life may be quite contented with his lot and achieve a measure of happiness. अब इट स्टेट्स कि इवन अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी जो कि एक स्मॉल हट में रह रहा है जिसके पास कोई कंफर्ट्स या लग्जरीज नहीं है लाइफ की, मे बी क्वाइट कंटेंटेड, वो भी कंटेंट हो सकता है, उसको भी फुलफिलनेस वाला फीलिंग हो सकता है विद हिज लॉट एंड अचीव अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस।
जितना भी उसके पास है, and he can also achieve a measure of happiness. On the other hand, a very rich man living in a palace and enjoying everything that money can buy may still be miserable. अब एक रिच मैन है जो कि एक पैलेस में रह रहा है, एंजॉइंग एवरीथिंग, तो मनी खरीद सकती है, बट स्टिल ही मे बी मिजरेबल, वो तब भी मिजरेबल हो सकता है इफ फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट एंजॉय गुड हेल्थ और हिज ओनली सन हैज टेकन टू इविल वेज. फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है इसमें स्टेटमेंट में दिया है कि या तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर उसका जो ओनली सन था, द ओनली चाइल्ड ही हैज, उसका क्या है, ही हैज टेकन टू व्हाट, उसने evil ways अपना लिए, he has gone on wrong path. Apart from this, he may have a lot of business worries which keep him on tenterhooks most of the times. और इसके अलावा भी उसकी लाइफ में बहुत सारी business worries हैं जो कि उसको tenterhooks पे रखती हैं most of the time. Now this was our very first question, tenterhooks. There is a limit to what money can buy. एक लिमिट है कि मनी क्या खरीद सकता है. And there are many things which are necessarily for a man's happiness and which money cannot procure. अब एक लिमिट है जिसमें limit to something which money can buy, and there are many things which are necessary for man's happiness. एक इंसान की happiness के लिए बहुत जरूरी है, and which money cannot procure, और जो मनी नहीं खरीद सकता है, ठीक है, नहीं पा सकते हैं हम थ्रू मनी उसको. रियल हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ राइट एटीट्यूड एंड द कैपेसिटी ऑफ बीइंग कंटेंटेड विद व्हाटएवर यू हैव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस एटीट्यूड. अब रियल हैप्पीनेस क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ राइट एटीट्यूड. एक सही एटीट्यूड है होना चाहिए. रियल हैप्पीनेस क्या है? सिर्फ एक राइट एटीट्यूड का मैटर है. एंड द कैपेसिटी ऑफ बीइंग कंटेंटेड, और कंटेंट फील करने की कैपेसिटी आपके पास जो भी है उसमें खुश रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, इस एटीट्यूड का, ठीक है. रियल हैप्पीनेस पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे पास जितना है आई एम सफिशिएंट विद इट, लाइक इट इज सफिशिएंट फॉर इट, ओके, आई डोंट वांट मोर. नाउ लेट्स लुक एट आवर क्वेश्चंस. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज द फ्रेज ऑन टेंटरहुक्स मींस व्हाट. अब ऑन टेंटरहुक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इट्स अ स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस, इट्स अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, सैडनेस एंड और फॉरगेटफुलनेस. अब टेंटरहुक का मतलब होता है स्टेट ऑफ एंजाइटी. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन देखो, इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू क्या है? मनी अलोन कैन गिव हैप्पीनेस, मनी अलोन कैन गिव हैप्पीनेस, मनी ऑलवेज गिव हैप्पीनेस, मनी सेल्डम गिव्स हैप्पीनेस, एंड मनी अलोन कैन नॉट गिव हैप्पीनेस. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है? खाली मनी हमें हैप्पीनेस दे सकता है, मनी हमेशा हैप्पीनेस देता है, मनी सेल्डम, कभी समटाइम्स, और मनी अलोन कैन नॉट गिव हैप्पीनेस. तो ऑप्शन नंबर डी एज पर आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट कि मनी अलोन कैन नॉट गिव हैप्पीनेस. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑप्शन नंबर सी. इट स्टेट्स अ रिच मैन लाइफ मे बिकम मिजरेबल. रिच मैन की लाइफ मिजरेबल हो जाती है कब? इफ ही हैज अ इविल सन, बैड हेल्थ एंड बिजनेस वरीज. यहाँ पे देखो हमारे पास यही सेम यहाँ पे लाइन था, which states what? On the other hand, a very rich man living in a palace enjoying everything that money can buy may still be miserable if, for example, he does not have good health or his only son has taken to evil ways. Apart from this, he may have a lot of business worries. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन में सब चीजें हैं. यहाँ पे हमारे पास है evil son, bad health, business worries. तो our option number A is correct. अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, which of the following is the most appropriate title to the passage? पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए? पॉवर्टी अ ग्रेट इविल. पॉवर्टी की बात ही नहीं की है, ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था वर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ पॉवर्टी. द की ऑफ हैप्पीनेस, अगेन it is not talking about the key of happiness, it is talking about contentment and key of happiness, how contentment is important for happiness. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एकदम सेम चीज है, कंटेनमेंट एंड द की ऑफ हैप्पीनेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है. नाउ लेट्स सी. Only a poor but contented man can be happy. सिर्फ गरीब रह के ही और कंटेंट होके भी आप हैप्पी रह सकते हो. A poor but contented man can never be happy.
You are contented and a poor. आप satisfied हो पर आप गरीब हो, पर आप कभी खुश नहीं रह सकते हो. It is incorrect. That first one is also incorrect. A poor but contented man can be happy. Poor but contented can be happy. A poor but contented man is always happy. Poor but contented man is always happy. Poor but contented man is always is an extreme word. You have to keep in mind what extreme words को भी आपको ध्यान में रखना. Is always happy. So it is also what incorrect. Only a poor but contented man can be happy. Only सिर्फ आपको अगर खुश रहना है, content रहना है, तो उसके लिए आपको poor होना जरूरी poor होना is necessary. Again, this is what? This is incorrect. So we are left with our option number C. It states a poor but contented man can be happy. So this one is correct. Option number C is correct. Okay, I hope this is clear. Guys, you have to practice it again and again, because without practicing, you won't be able to get all these questions. Okay, specifically active and passive voice, direct and indirect, they are most repeated questions, and they are most repeated topics, and you will get the most repeated questions as well. So practice first of all previous year questions. Okay, because many a times they tend to repeat. एक आधा question उनमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा. Okay, next thing is solve one topic, like solve one question of each topic, or I'll say solve one comprehension every day. 2 to 3 question of direct, 2 to 3 question of active. That's all. That is sufficient. Okay. So that's all for today's lecture. I'll see you guys tomorrow, and we'll start with our next topic. That's all for today. Have a good day ahead.